हाय। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन ब्राज़ील। ओके, सो ब्राज़ील में किस तरह की पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको मेनली हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन। देखिए, ब्राज़ील बिकम द सोवरेन कंट्री इन 1822 आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सेंचुरीज ऑफ पोर्तुगीज रूल। तो मेनली ब्राज़ील के अंदर किन का रूल था? पोर्तुगीज का रूल था। ओके, सो ब्राज़ील इज डिवाइडेड इनटू 26 स्टेट्स and one federal district and 5581 म्यूनसिपालिटीज। ठीक है, इस तरह से इसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। दी कैपिटल सिटी ब्रासिला। ओके, ब्रासिलिया। दी कैपिटल सिटी इज दी ब्रासिलिया। ओके, is the seat of the federal government of the republic. So now we'll see the political system of the federal representative democratic republic. So the Federative Republic of Brazil is a presidential representative democracy, and elections are conducted every 2 years. Okay, on the first Sunday of October or on the last Sunday of October. Okay, this is the election day. So Article 77 allow simultaneous election of the president and vice president of the republic on the first Sunday of the October for the first round, and on the last Sunday of October of the year. Okay, if there is a second round, then election method of the majority system is followed, wherein the candidate with the majority voters will be declared winner. ठीक है, तो इस तरह से प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन मेनली कंडक्ट किया जाता है इन दी ब्राज़ील. So in matters of election, the superior electoral court, okay, remain the fundamental body to ensure the vibrant democracy in the Brazil. Okay, its mandate is established by the federal constitution and the electoral code. Okay, this one. So the court operate with 7 judges, of whom 3 are from the federal supreme court and 3 are from the superior court of justice, and 2 representative with the outstanding legal knowledge and practice. The court is headed by the judge from the federal supreme court. So this is the highest apex court in the Brazil. So in 2012, the electoral accountability system was brought in, bringing about the electoral campaign accountability in the financial committees and political parties as well. So now this is the main political system of the Brazil. Okay, so here we will see the dates of the mainly president and vice president, and here is the court. Okay, electoral court. Okay, how the election is conducted. Now we will see the administrative system, that is the legislative. Okay, the legislative branch is represented by the National Congress. Okay, made up by the Federal Senate and the Chamber of Deputies. So इस तरह से, जैसे नेशनल कांग्रेस मतलब पार्लियामेंट इन सेंस ऑफ इंडिया, and federal senate and chamber of deputies. Okay, that is both house of the congress. So Brazilian constitution allow every legislative term for the last 4 years. Okay, for 4 years. Okay, the tenure of this national congress. The national congress has been given the power to regulate tax system and income distribution, make multi-layer plans and annual budget, as well as the national, regional and sectoral development plan and program, and determine the number of troops in the आर्म फोर्स. ये सभी काम किसके? मेनली नेशनल कांग्रेस के है. ठीक है, सो इट हैज़ बीन गिवन अ सर्टन एक्सक्लूसिव पावर. फॉर एग्जांपल, परमिट द प्रेसिडेंट to declare a war, allow foreign force to transit through or remain on the national territory temporarily, and ratify international treaties, agreement and act. So these all power are given to the National Congress of the Brazil. Okay, so the Chamber of Deputies signify the Brazilian people who elect their representative every 4 years. So this is Chamber of Deputy, just like the Lok Sabha in sense of India. Okay, so they are elected for the period of 4 years through the direct universal suffrage. It is headed by the president, that is speaker
okay, and the member of the chamber, that is deputators federals, serve for the 4-year terms. The chamber of deputies has been granted exclusive power for the impeachment of the president and vice president and the ministers of the federal government, initiate confiscation of the account of the president, that is impeachment process mainly, okay, if they are not submitted the national congress within 60 days after commencement of the legislative session. So elect member of the council of the republic and more. So these all are the function of the chambers of deputies, that is mainly Lok Sabha in sense of India. Now federal senate, that is Rajya Sabha, okay, India के सेंस में symbolize the interest of the federation unit, okay, ये mainly किसको किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो यूनिट फेडरेशन दैट इज प्रोवेंसेस, ओके, इन द ब्राजील. सो इट इज हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट हु सर्व 4 years, ओके, सेम प्रेसिडेंट कहा जाता है, हमारा चेयरपर्सन कहा जाता है इन सेंस ऑफ इंडिया, ओके, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट विल चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा. सेम वे हियर द प्रेसिडेंट, ओके, प्रेसिडेंट कॉल्ड मेनली प्रेसिडेंट बोला जाता है फॉर द फेडरल सेनेट के लिए, फेडरल सेनेट के चेयरपर्सन को. सो द मेंबर ऑफ द सेनेट serve a term of 8 years subject to renewal after 4 years, okay, हर 4 साल में चेंज होंगे. The federal senate has the exclusive power of impeach the president and vice president and the minister of the federal government and commander of the navy, army and air force, okay, these are the power of the, that is federal senate. It can be approve and appoint the judges, president and director of the central bank by secret ballot and authorize state external affairs and financial operations, okay. So these all are the main functions, okay, these all are the functions of the federal senate. Now we'll see the executive. The president of the republic is conferred with the executive power by article 76 of the constitution, ओके, तो एग्जीक्यूटिव पावर किनके पास है, प्रेसिडेंट के पास है, ओके. सो प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म फोर्स. सो इट डायरेक्टली इलेक्ट फॉर द पीरियड ऑफ 4 years and is allowed to stand only once for re-election, okay, एक ही बार. The president has been granted exclusive power to appoint and dismiss ministers of the federal government, ensure efficient federal administration and veto bill wholly or partially, ठीक है. These all are the power of the president of the republic of brazil, okay. Now this is the vice president. So vice president is elected simultaneously with the president for a term of 4 years, okay. So he serve as the acting president when the office of the president is fall vacant and his mandate is to perform द ड्यूटीज एज मेंशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई है वो ड्यूटी परफॉर्म करना है किसको, वाइस प्रेसिडेंट को, ओके. द मिनिस्टर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ऑल मिनिस्टर्स, ओके. आर्टिकल 87 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ब्राजील, मिनिस्टर्स, ओके, शुड बी ministers should be selected from among the Brazilians, okay, age more than 21 and fully possession of their political rights. So these are the qualification to become the member, okay. So first the Brazilian like Indian, okay, age 21 or more and fully possession of their political rights, okay. The ministers have been granted power to ensure good federal administration within one authority, okay, and countersign law and decree signed by the president, supervise the implementation of the law, decree and regulation and submit the annual performance report to the ministers, okay, or report of the minister to the president. So these all are the power of the, okay, ministers, okay. Now we will see the judiciary. Now it's up to the, this is the executive, okay. Now we will start with the judiciary. The judiciary power shared between the ordinary branch and the special branch. The former, that is the ordinary branch, okay, include the फेडरल सुप्रीम कोर्ट, ओके. ऑर्डिनरी ब्रांच के अंदर कौन आते हैं, फेडरल सुप्रीम कोर्ट, दैट इज सुप्रीमो ट्रिब्यूनल फेडरल, ओके. सो सुपेरियर कोर्ट ऑफ द जस्टिस एंड रीजनल फेडरल कोर्ट, दो टाइप. फर्स्ट द सुपेरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस
and second is the regional federal court. So while the latter include the, अभी इसमें स्पेशल ब्रांच में कौन कौन आते हैं, स्पेशल ब्रांच में आएंगे लेबर कोर्ट आएंगे, इलेक्टोरल कोर्ट आएंगे, मिलिट्री कोर्ट, स्टेट, फेडरल डिस्ट्रिक्ट, टेरिटोरियल कोर्ट, ये सभी किस में आएंगे, स्पेशल ब्रांच के अंदर। मतलब दो टाइप के मेनली जुडिशरी पावर को, मतलब जुडिशरी पावर को मेनली दो ब्रांच के अंदर डिवाइड किया गया है, शेयर किया गया है, ऑर्डिनरी ब्रांच एंड स्पेशल ब्रांच। ऑर्डिनरी ब्रांच में ये सभी आएंगे, ओके। सुप्रीम कोर्ट आएगा ऑफ द जस्टिस, ओके। मेनली पहले आएगा फेडरल सुप्रीम कोर्ट, then supreme court of justice and regional, okay. So these three type of court will come under the ordinary branch, that is federal supreme court, superior court of justice and regional federal court. So these all three come under the ordinary branch, and special branch के अंदर कौन आएंगे, ये सभी आएंगे, लेबर कोर्ट, इलेक्टोरल कोर्ट, मिलिट्री कोर्ट, फेडरल कोर्ट, टेरिटोरी कोर्ट, ये सभी इसके अंदर आएंगे। दी फेडरल सुप्रीम कोर्ट इज द अपेक्स कोर्ट, ओके। जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट है ये अपेक्स सबसे बड़ा कोर्ट है, जैसे कि इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट होता है। इट इज कंपोज ऑफ 11 जस्टिस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द फेडरल सेनेट, सेनेट जैकि मतलब जो राज्यसभा है उसके कंसल्टेशन से ही उनको अपॉइंट करता है, किनको, जजेस को। सो इट हैज़ द ड्यूटी टू इंश्योर दैट constitution is not violate and provide the final verdict on the constitutional question. So now these all are the mainly function of the court, okay. First one, the to protect the constitution, then second is the superior court of justice is the next important organ of the judicial power, and it is made up of 33 justice appointed by the president on the basis of the list of the three named given by the court itself and approved by the senate. So senate will perform very important role for the appointment of the judges in the Brazil. So this court has the duty to provide for the uniform interpretation of the federal legislation, okay. So below the superior court of the justice there is a फेडरल कोर्ट कंपोज ऑफ फेडरल जजेस, ठीक है। तो तीन लेवल के हमने मेनली जो ऑर्डिनरी ब्रांच के अंदर जो कोर्ट है वो देखिए, फर्स्ट वन इज द फेडरल सुप्रीम कोर्ट, सेकंड इज द सुपीरियर कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड थर्ड इज द रीजनल फेडरल कोर्ट, ओके। नाउ विल सी द special branch court, that is the labor court. Here the case of individual and collective conflict between the employees and employer, employer जो काम देता है and employees जो काम लेता है, okay. So the electoral court ensure proper implementation of electoral procedures and right to direct the and secret ballot, okay. The military court judge military crime, while state court to rule on the case not under the jurisdiction of the federal labor, इलेक्ट्रोल एंड मिलिट्री कोर्ट, ठीक है। तो ये सभी किसके फंक्शन हो गए, स्पेशल ब्रांच के, स्पेशल ब्रांच के अंदर जो कोर्ट आते हैं उनके, एंड दिस ऑल आर दी ऑर्डिनरी ब्रांच कोर्ट, ओके। सो दिस इज द जुडिशरी एंड दिस इज द एग्जीक्यूटिव एंड दिस इज लेजिस्लेचर, ओके। इस तरह से हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझा एंड इस तरह से हमने मेनली पॉलिटिकल सिस्टम को समझा ऑफ द ब्राज़ील, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द साउथ अफ्रीका, ओके, किसकी, साउथ अफ्रीका की। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।